Welcome to Piplantri, Rajasthan, a village that has been doing an ecological and social revolution. Since 2007, when the village began to plant 11 trees for every person who dies, and a whopping 111 trees for every newborn girl, turning every birth into a blooming celebration. The name Piplantri, is it like the original name of this village or did it Yes, change? it's the original name of the village. It resembles the word like people plant tree, but it's a coincidence. There are no coincidences. I met with Rahul. His sister's sudden death was the spark that inspired their parents to begin this project. His father was the head of the village back then, initiating the project, and his mother is the head of the village now. So this was all barren when we started. The area that you have seen there, it was same like that only. I have pictures of this area. This is a picture of the place we're in 18 years ago. And this is how it looks now. When we started our plantation, we started from this place. So here we have the first tree that was planted. When he was the head of the village, he took an oath for the very first time that because earlier ladies used to sit down and men used to sit on the chair, so he didn't like this concept, and he asked all the ladies to also come and sit equal to the men. So that was the first thing that he did, and then he insisted all the women of the village to come out of their houses and earn as much as their men, their husbands could. My sister, she passed away due to dehydration, and my father and my mother, they were very sad, and after 12 days when the villagers asked them to join the office, he came here and he planted this tree in memory of her. So this was the first tree, and while planting this tree, he was he thought that if I can plant a tree in memory of my daughter, why not plant trees for every girl child born in the village. So this is how this idea came. And then he started this initiative from that moment that we'll plant trees for every girl child born. And then he thought how many trees should we plant. So first they thought one plant for each girl child, but then he thought that will be a very less number. So an idea came of 111 because that's an auspicious number in Hindu culture. Also one for the daughter, one for the father, and one for the mother. So it became a huge 111 number. So this is how this concept started. Now, the soil here is fertile. There is a diversity of plant and animal life, and water is abundant. But it wasn't always like this, because Piplantri has a wound in its heart. One of the biggest marble mines in the world is here. Pollution and the depletion of the groundwater was the trend for years of intensive mining. The deeper the mine went, the further the groundwater receded, and the wells were getting empty. So the people of Piplantri couldn't just start planting trees. Water was scarce,
so the trees wouldn't survive. They had to begin using water management techniques to make sure every drop that falls from the sky gets absorbed into the soil and filters down into the aquifers. Now, this is the holistic way of ecosystem restoration in drier climates. If you can catch the rainwater in the soil and then increase the vegetative cover, then you create what's called a positive feedback loop, which means life attracts more life and water attracts more water. As the land starts to accumulate more and more water, there is more life in the soil, which can then support more and more vegetation. This increase of vegetation creates a microclimate of humidity, bringing insects and microorganisms, which are the foundation of a more complex ecosystem. And the water that is released through the leaves of the plants goes up into the atmosphere to create clouds and then bring in more local rain. As the ecosystem comes back into abundance, the conditions are suitable enough for the plants to reproduce and spread by themselves. This increase in water and vegetation attracts birds and animals, spreading seeds and manure, slowly turning this place into a forest. And because many of the trees planted are fruit trees, this is becoming a big food forest. Mango, cluster apple, papaya, banana, amla, sapote, and many more edible and medicinal plants are now feeding and healing the people and animals of Piplantri. As the time passes, the ecosystem rejuvenates, becoming increasingly interconnected, releasing more oxygen and becoming an overall healthy environment for people to live in. Up to today, approximately 350,000 trees have been planted here in Piplantri. Farmers and college students from all over India come here to learn about sustainability and self-sufficiency. जब मेरा जन्म हुआ तब तो काफ़ी अच्छा ही था। मेरा बचपन तो मैं थोड़ी बड़ी हुई तो ये माइंस वगैरह से वजह से हम लोगों ने अपनी जो निजी ज़मीन थी उन माइंस वालों को बेच दी। माइंस वाला ने सब पेड़ पौधे काट के पत्थर ही पत्थर इलाका कर दिया। आज उस टाइम मेरा छोटा बचपन था, उस टाइम मेरे को अच्छा लगता था। बीच में जो ये साल निकले तो उसमें लगता है पूरा ही पत्थर है, लोग बाहर जाने लगे। अब वो नहीं, अब हमारे पेड़ पौधे वापस लगे। हम और पानी गांव में रुक जाएगा तो ऑटोमेटिक ही प्लांटेशन और पेड़ पौधे बड़े होने लग जाएगा। इसमें मैं पेड़ पौधा लगवाना, पानी देना इनको, और पानी को कहाँ रोकना क्या नहीं रोकना, तो वहाँ चेक डैम वगैरह ये सारा काम मैं देखता हूँ। और मैं वैसे ही गांव का काश्तकार हूँ तो मेरे को सब ध्यान है कि भाई हमारे बाप दादे बुजुर्ग कैसे खेती करते थे, कैसे पानी बचाते थे। By building check dams where the water flows during the rain, they were able to stop and spread this water. This then prevents from the water eroding the soil and taking away all the valuable organic matter. And in some occasions, it even creates ponds like this one, which stay full for the duration of summer. अब जो हमारे गांव चरागा भूमि होने लगा है, करीबन 2500 के आसपास कच्चे पक्के चड्डे। पहले पानी की वाटर लेवल था 700-800 फीट। आज हम कभी बोरिंग ट्यूबवेल करवाते हैं तो 200-250 फीट पे पानी आ जाता है। 24 घंटा आप देखते हो हमारी पाइपलाइन फुहारे चल रही है, पानी टूटता भी नहीं, अनफिट पानी। 2005 में जब श्याम सुंदर जी पालीवाल जी सरपंच बने, तब हम गांव की सारी महिलाएं घर में ही रहती थी। न तो कोई बाहर जाना न आना, घूंघट निकालना।
घर का काम करना, खेती बाड़ी का काम करना, यही करती थी। 2005 के बाद हमने ये सोचा कि महिला है, कुछ कर सकती है। सोचा भी एक एक करके बाहर निकलो। एक मैं निकली, मेरे साथ मेरे देरानी जेठानी, मेरे साथ वाली मेरी सहेलियाँ बाहर निकली। आज वो नहीं, हमारी बहन बेटियाँ सब स्कूटी लेकर मार्केट जाती, स्कूल जाती ना। आज हम सब खुश हैं। हमारे घर में भी परेशानी आई थी पहले कि बाहर नहीं जाना है, नहीं जो है जो खाओ और घर पे ही रहो। तो मैं निकली बड़ी मुश्किल से। वही नहीं, आप थोड़ा आप कमाओगे, थोड़ा मैं कमाऊंगी, थोड़ा अपना बच्चे कमाएंगे। पहले तो यहाँ कोई था काम था ही नहीं। जैसे कोई मेरे साथ दूसरी महिला, भाई ये भी जा रही, मैं भी जाऊँ। तो मैंने उन महिला को बोला भाई मैं जा रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं, काम की कोई श्रम नहीं, आप ही मेरे साथ चलो। ऐसे एक एक कर करके सब बाहर निकल गए। एक जो कहते थे कि महिला कुछ नहीं कर सकती है, तो हम उसी में ही नहीं रहना चाहते थे कि महिला सब कुछ कर सकती है। इसलिए हम एक एक करके बाहर निकले। पहले इतनी नहीं, 12वीं 14वीं कोई इंटरेस्ट नहीं लेता था लड़की को पढ़ाई के क्या करना। अब सब लड़के बहुएं सब पढ़ती है, बहुएं आती है वो भी पढ़ती है। We are a group of 13 girls and 2 officers of the Indian Army, and we started a journey from the southern tip of India, and we will be cycling all the way up to Delhi. These girls are from very, very average families, but we have been able to give them a glimpse of the entire India. The slogan for our rally is Mahila Shakti Ka Abhedya Safar. In English, it translates to the unstoppable journey of the women power. क्योंकि हम हिंदुस्तान के फ्यूचर है, हम यंग जनरेशन है। तो जो पुराना जो हिंदुस्तान था हमारा, जो एक हिंदुस्तान था, जो वहाँ की जो संस्कृति थी, प्राणियों को प्रेम, प्रकृति को प्रेम, मनुष्यता को प्रेम, तो वो जो एक था तो अभी वो छूट रहा है। कलयुग में वो थोड़ा सा गैप दिख रहा है। और जो पिपलांत्री है जो इसी संदर्भ में कार्य कर रहा है, जहाँ महिलाओं को जो एक सम्मान है, एक सम्मान भी नहीं, एक ऊंचा दर्जा मिल रहा है, पेड़ पौधे लगा रहे हैं। तो ऐसा सारे गांव ऐसा मिलके करें। और गांव की कहते हैं ना, अभी मैंने कल सुना कि गांव की आबादी ज़्यादा है, लोग गांव में ज़्यादा रहते हैं। तो अगर गांव में ही ऐसे बदलाव शुरू हो गए तो पूरा भारत देश में एक बदलाव होगा और एक बनेगा, एक भारत श्रेष्ठ भारत की तरह। धन्यवाद। And if that's not enough, all of the farming done in and around the village is completely organic. पहले करते थे, आज से 15 साल पहले। उसके बाद इन पालीवाल जी ने, श्याम सुंदर जी ने बता दिया कि ये एक कैंसर वाली बीमारी है, और इन्होंने हमको सिखाया कि भाई वापस जैविक खाद पे वो केचुए वाले खाद बनाओ, गाय भैंस का वो डालो। तो अब हम वो DAP यूरिया इनको छोड़ दिया और वापस वो। This is important information because for the last 10 years, every day an average of 30 Indian farmers commit suicide, largely because of debt to the chemical industry. मैं पिछले खेती करते करते को तो मेरे को करीब 50 साल हो गए। छोटा था जब से खेती कर रहा हूँ। कभी कभार पिताजी के टाइम में कभी खाद लाए होंगे, उसके बाद में मैंने खाद का उपयोग मैंने हाथ से मैंने नहीं किया। और ये गेहूँ देख लो, और जिसने यूरिया डाला है और DAP यूरिया डाला है उस गेहूँ को देख लो, इसमें और उसमें कोई फर्क हो तो बता दो। इसमें अगर DAP यूरिया डालेंगे अपन तो मान लो कि 2-3 बोरी होगा, उसका 50 किलो ज़्यादा हो जाएगा, हैं कम होगा 2.5 किलो, तो 2.5 बोरी तो होगा, वो तो सही होगा। वो तो सूखी रोटी खाएंगे तो भी उससे कम से कम अपने शरीर तो सेफ रहेगा। पूरे विश्व को प्राकृतिक खेती की बड़ी आवश्यकता है। कोरोना जैसी महामारियां सिर्फ इसलिए आ रही है कि हमने इस धरती पर इतना केमिकल घोल दिया है, जिससे एक बीमारी पर कंट्रोल कर पाते हैं और दूसरी बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है। तो हम प्रकृति के साथ चलेंगे, प्राकृतिक खेती करेंगे, प्राकृतिक आधारित रोजगार करेंगे और प्रकृति का सम्मान करके
इस धरती माता को बचाने का काम करेंगे तो फिर बीमारी हमारे पास नहीं आएगी। ये काम हम कर रहे हैं। If we just walk 2 kilometers away from the village, we can see how the terrain looked before the project began. There's a lot of bare soil, and most of the plants here are hardy bushes. Inside the village, the climate resembles more and more a tropical forest. Do you see that house over there? Do you see it now? Me neither. Up to today, 167 villages already adopted Piplantri's model to some extent, planting trees and bringing ecosystems to life. हम चाहते हैं, वैसे बहुत से लोग पिपलांत्री से सीख के दूसरी पंचायतों में भी बहुत काम हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में भी हो रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ऐसे हर जगह, हर राज्य में, हर देश में, विदेशों में भी ये काम हो पर्यावरण पे। हम यहाँ पर देने की प्रयास कर रहे हैं, जैसे बांस के आधारित उद्योग, बांस के फर्नीचर बने, बांस के डस्टबिन बने, बांस की कई चीज़ें जो बनती है वो हम यहाँ बनाने के प्रयास कर रहे हैं। आंवला से आधारित उद्योग लगाकर लोगों को रोजगार दें, और एलोवेरा से आधारित सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर रोजगार देने का काम, इस तरह के काम जो लोगों को प्राकृतिक आधारित रोजगार हो, जो केमिकल युक्त नहीं हो, जो धरती में प्रदूषण नहीं फैलाता हो, उस काम को हम लोग यहाँ करवाने के प्रयास कर रहे हैं। और बड़े स्तर पर हम नेचुरल फार्मिंग, प्राकृतिक खेती भी हमने शुरुआत की है। पिपलांत्री मॉडल को आगे बढ़ाने में पिपलांत्री की 90% महिलाओं का योगदान रहा, और महिलाओं ने ही इस काम को आगे बढ़ाया है, और आज भी महिलाएं इस कामों में बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। यहाँ के लोग और हम मिलकर यहाँ की बेटियों और यहाँ के पेड़ों में कोई फर्क नहीं मानते हैं, क्योंकि ये पौधे बेटियों के जन्मदिन पर लगाए हैं, बेटियाँ इसको गले में लगाती है, और इसमें बेटियों का। मेरी बेटी किरण की डेथ के बाद मुझे बहुत पीड़ा हुई, और मुझे बहुत ऐसा बेटियों के महत्व का पता लगा कि बेटी क्या होती है। हमने हमारी एक बेटी खो के गांव में हजारों बेटियां पाली। Now, what we can learn from Piplantri is how they used one model or one course of action to address both the environmental, the economic, and the social issues of this place. Because the healing of the ecology and the healing of the social fabric are actually one of the same. As I bid farewell to Piplantri, I'm filled with a sense of nostalgia and admiration. It's disheartening to realize that such a pristine environment is a rare gem in today's world. Imagine how wonderful would it be if every town, city, and village embraced a commitment to prioritize the health of the local ecosystem. Some argue that nature and humanity exist in perpetual conflict. But isn't that peculiar? In reality, we are intricately woven into the fabric of healthy ecosystems, much like any other living being. Our true prosperity hinges on the values of clean water, fertile soil, art, and community, essential elements that sustain our lives. Sadly, the relentless glare of consumer-driven economic culture has obscured this truth, leading us to neglect our sacred responsibility to the elements that nurture us. Yet, if we dare to redirect our gaze, a different narrative unfolds. A narrative steeped in love, connection, and the wisdom to care for what truly matters. And Piplantri stands as a living example of that narrative.
Okay, actually, it's not a picture, it's a video. Okay. Can you sing one song for me? Just one song. What would you like to hear? Anything. Let's party. Let's party. In Hindi. In Hindi. Yes. हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, एक दिन ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। भारत माता की जय। Wait, what is this song? Jai! Is this the national anthem or something? No. What is this? It's like Justin Bieber song.